What's up people, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching the video at. This is your host Ganesh and you're watching my channel Beardo on Enfield. So guys, as you can see the thumbnail and the title of the video, I am heading towards Bhuleshwar Temple, Bhuleshwar Mandira Kade. This road goes to Bhuleshwar Temple. If you're coming from Pune Solapur, this is the Pune Solapur highway right now where I'm standing at. And if you're coming from Pune side, this is the way where you can come from Pune, and यहाँ पे road crossing है. Road cross करके you have to go towards Bhuleshwar Temple on this way. That's my enchantress. My brother is on Fraser and the elder brother is on Dominar. So let's head up over there. If you can rate the difficulty of the घाट, and it is medium, तो यहाँ से घाट चालू होता है सासवड़ का. तुमको एक माइलस्टोन दिखेगा यहाँ पे सासवड़ करके, and from here it's like घाट starts. ये भाई इतना बड़ा टर्न था ये वाला. ब्लाइंड स्पॉट है भाई, प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दिस ब्लाइंड स्पॉट, द वेरी फर्स्ट ब्लाइंड स्पॉट ऑफ दिस रूट. एंड सी what is the difficulty level of this घाट. And this is the spooky haunted tree. लोग बोलते हैं this is a haunted tree over here. रात के टाइम पे अगर आ रहे हो वो ट्री का ना रात के टाइम पे, that's very spine chilling. भाई अपने रिश्ते आना रात के टाइम पे. Temple up over there, if you can see. भुलेश्वर का यहाँ पे बोर्ड दिखेगा तुम लोगों को. एंड जैसे भुलेश्वर का बोर्ड दिखता है वहाँ से आपको राइट लेना है. यहाँ पे भी एक छोटा सा ढाबा स्टॉल है, भुलेश्वर होटल एंड स्नैक्स. एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, श्री क्षेत्र भुलेश्वर देवस्थान. अब गाँव वाले बोलते हैं कि दिस इज़ अ 2,500 years ओल्ड टेम्पल. मेरे ख्याल से रोड पीछे था क्या? पीछे रोड था क्या? आई थिंक सो. आई थिंक तिकड़ना है क्या? तो यहाँ तक का रास्ता अच्छा था, यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड है. तो इफ यू गाइस आर कमिंग ऑन हिमालयन और समथिंग देन यू मे कैन एंजॉय दिस रूट. बट साइडलिंग करते मत आना, यू माइट एंड अप फॉलोइंग द वे आई फॉल्ड लास्ट टाइम. कच्चा रास्ता है भाई, मड़ी है, कच्चा है, पॉट होल्स है, सो बी केयरफुल ऑन दिस रूट. क्राउड तो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रहा है यहाँ. When I came last time, I was the only person here. Nobody else, no other families were here. आज मार्केट लगा है शायद. I don't know what exactly it is, but then I can see a lot of people out over here. And that's the temple. थोड़ा बहुत कलर वर्क किया हुआ है, but it's a very old monument. ऐसा हेलमेट से हाथ लावतो का? तो बघ ना, हेल्मेटच्या आतमध्ये घुसवतोय. काय आहे ते? येल्लो आहे. काय येल्लो? अरे काय आहे ते? गंध आहे. What's up bro? What the fuck? ऐसा नाम रखी. आज काय रे इथं? काहीतरी आहे. आज काय आहे चिकू? आज सॅटरडे असल्यामुळे ना आज असतो नाही का, सेंसिटिव सैटरडे कर दिए बोल रहे हैं. सावन पण सावन का महीना है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल आर हियर. लॉर्ड शिवाज डिवोटी. शंकराचं मंदिर है ना. आई एम राइट. लॉर्ड शिवाज डिवोटीज आर प्रेजेंट हियर. काय पूजेचं ताट वगैरे होता. हेलमेट तो चाहिए भाई मेरे को ऊपर. आई कांट कीप माई हेलमेट समवेयर. सो देयर आर few steps that we have to climb up, and then we can enter the temple. GoPro Hero 10 का बॉक्स है बॉस, and I am using GoPro Hero 10 that belongs to my brother. सीधे भाई बोला व्लॉग शूट करने के काम तो आएगा. I'll just remove my helmet over here. थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा है. हाँ जाने का ना, अंदर है और एक्सप्लोर करने के लिए. The moment you enter, you will see a huge bell hanging up over here.
त्या मानाच्या काट्यासाठी असे इथं दोघं जण ते दोघं धरतात काट्याशी नाचवत खालून वरपर्यंत आणायची नव्यात पाणी असतं त्याचं काय पाणी नदीचं अच्छा नदीचं पाणी आणून पिंडी वाचायची it says capturing images is not allowed but let's see it's pretty dark over here I hope nobody restricts me to take videos out over here. People are doing it. People are taking pictures, so I don't think it's very offensive out over here. त्याच्यावरचा अफजल खान आलता ना औरंगजेबने अफजल खानाने मूर्त्या तोडलेल्या सगळ्या पुढे सगळ्या मूर्त्या अफजल खानाने तोडलेल्या Bloody Afzal Khan. मला न This is the main temple. फोटो काढू नका slippery hai, so be careful. So guys, returning back to our home at my native place and ho gaya darshan. So ending the vlog here. If you are new to the channel then make sure to subscribe, and if you have watched the video until now then make sure to hit that like button. So take care and ride safe. मेरे मामा का लड़का है ना रोहित, चिकू जो सीट बना रहा था उसने उसके बेटे के लिए ना एक बलून लिया हुआ था, वो होल्डिंग बलून तो गया होगा, डंडी बची हुई है बस